Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. This is part 1 of lesson number 5, the fundamental unit of life. Now you are studying about this science, and this fundamental unit of life is basically a topic that comes under biology, right? So you might have come across one statement since you are studying this biology that cell is the structural and functional unit of life. राइट आपने ये चीज़ बहुत बार एनालाइज किया होगा, ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग ऑन सेल. तो ये चीज़ आई जाती है, द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज देयर ऑन द टॉप विच इज़ गिवन एज दैट द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बट अ क्वेश्चन कम्स, why do we call a cell as the structural and fundamental unit of life? Because if you can see the lesson name itself, like it has not said us that we are discussing on cell, but it has just given us an hint, the fundamental unit of life. And we are very much smart enough to know that if it is discussing on the fundamental unit of life, it means we are about to discuss on cell, right? And आपको एक चीज़ पता होगी, wait, I'll write it. How our human body is made up of? ये फ्लो कभी भूलना मत, because this is the basic thing which you should know. अब हमारा जो human body है ना, that is made up of cells. We have ample number of millions of cells which are present in our body. Okay, so when a group of cell comes together, they makes up this tissue. I hope you are aware of हमारे body में tissue है, right? So when a group of cell come together, they make this tissue, and when a group of tissue come together, they make up the organs of our body. We all are aware of that we have heart, we have liver, we have kidney. How those organs are formed? These organs are formed when a group of tissue come together, they form this organ. And we all are aware of that we are having our respiratory system, digestive system, circulatory system, which is functioning in our body, right? So how these different functions have been carried out in our body? Because of the different organs that we have. It is because of the coordination that our organs are having with each other, right? Respiration के लिए like we have our lungs which are responsible, along with that we have pharynx, we have larynx, like, right? So there are different organs जो एक दूसरे के साथ coordinate करते हैं, and then that specific system has been carried out. So when a group of organ, they are coming together and they are working together, that makes up our organ system, which functions as respiratory system, circulatory system, and many more. And when this organ system is working together, it means a multicellular organism is formed. क्या form हुआ है? Multicellular organism. And this multicellular organism is we human being, and this is how our body is been formed. I hope that you all know the basic thing, how it is. This thing should be clear in your mind as to how everything is happening in our body. Organ कैसे form हुए हैं? There is no magic that has occurred कि organs का formation हो गया हमारी body में. Okay, हमारी पूरी body cell से बनती है, and जब group of cells एक साथ आते हैं तो वो tissue बनाते हैं. When a group of tissue come together, they make the organ, and when these organs they are coordinating with each other and they are functioning with respect to certain kind of you can say they are performing certain function in your body. जैसे कि हमारा respiratory system हो गया, then we have circulatory system, excretory system. In that different organs are working together, and they are like executing the function of the body,
राइट. सो दैट मेक्स अप आवर ऑर्गन सिस्टम. एंड एक बार ऑर्गन सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट करके व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, वी से दैट नाउ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज बीन फॉर्म्ड एंड दैट इज वी ह्यूमंस आर फॉर्म्ड. So now you know how we humans are formed, right? And since in this lesson we are going to discuss everything about the cell, there comes a question in our mind कि अगर मैं आपको किसी चीज़ की रेसिपी पूछूं, वॉट एवर योर फेवरेट डिशेज, इफ़ आई आस्क यू अबाउट आलू का पराठा, there are certain ingredients which are you are going to add in that, and then only the result what you're going to get is आलू का पराठा, right? सो यर सेल्स में भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो हमारे सेल्स को बनाते हैं. सो आई होप यू हैव हर्ड अबाउट द न्यूक्लियस, अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, about the endoplasmic reticulum, about the cell membrane. So this is what we are going to discuss on the components of the cell as well in this lesson. So because हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन होता है ना, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल, माई टिश्यू एंड माई ऑर्गन, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सर्टन थिंग्स. देर आर सर्टन ऑर्गेनल्स विच आर बीन इन्वॉल्व देयर. सो आपको अभी सी when you were in your earlier classes, you might have studied about the plant cell and the animal cell. You might have studied about the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. But since this is a human tendency that we need revision, because revision is very important part, right? And since you are in CBSE board, you might be aware of all the things, but I'm going to give you the differentiating table between the plant cell and the animal cell, because we are going to discuss about the cell itself, right? So you should know like what are the two different types of cells that we are having. So we are going to make a comparison table here between the plant cell and the animal cell, okay? And I want you all to take a note of it so that you have something for revision purpose with you all, okay? So see, plant cell and animal cells ka differentiation, I am writing it on the screen. So plant cell and animal cell. Now let's see what can we write. Now हमेशा याद रखना that plant cell have cell wall. क्या होगा plant cell के पास? Plant cell is going to have cell wall, but animal cell doesn't have a cell wall. All right, animal cell doesn't have a cell wall. So this is one of the differentiating point that you can write. Then with respect to plant cell, you can write that plant cells, they have chloroplast, okay? So plant cells, they contain chloroplast, okay? And animal cells में you can write that they don't have chloroplast, okay? Then you can say that the plant cells, they do not have centriole, okay? Plant cells do not have centriole. So if the plant cell is not having centriole, animal cell is having that, okay? So you can write that centriole is present in the plant cell, okay? Then one more point you can write is, what do you think, what can we write? Nucleus, you can write about the nucleus. So you can write that nucleus is present in the side of the plant cell. Nucleus is present at the side of plant cell,
And with respect to animal cell, you can write that here also nucleus is present, but animal cells ke andar the nucleus is going to be in the center. So if you can see this diagram, I'll show you. This is a diagram of animal cell, and this is the nucleus which you can see in the center. Okay, so nucleus is present at the center. So with respect to plant cell and animal cells, you can have this much things in mind कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगा, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होगा. प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा. देन प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स नहीं होगा, बट एनिमल सेल्स दे आर गोइंग टू हैव दिस सेंट्रियोल्स विद देम. ओके, एंड लास्टली यू कैन रिमेंबर कि प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल के साइड में प्रेजेंट होगा. इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द प्लांट सेल. एंड एनिमल सेल में यू कैन रिमेंबर दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल. ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? एट द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल. देन one more question comes here is about the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. So even I am going to give you the differentiating point with respect to that. तो prokaryotic cells के बारे में I am going to write here prokaryotic cell, and eukaryotic cell के बारे में I'll write here eukaryotic cell. Okay, so see, prokaryotic cell का size जो होता है ना, this is generally small. Okay, generally it is small and it is going to have a size of 1 to 10 micrometer. कितना size होगा? 1 to 10 micrometer, and I'll write 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 6 meter. Okay, and eukaryotic cell का size कितना होगा? Here the size is generally large. Okay, so कितना होगा ये large size? 5 से 100 micrometer, and 1 micrometer is equal to what? 10 raised to minus 6 meter. Okay, then the second point you can write with respect to prokaryotic cell, that nuclear region is poorly defined because there is no nuclear membrane and there is no nucleoid. So there is the nuclear region of this prokaryotic cell is poorly defined. But when it comes to eukaryotic cell का न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इट इज़ वेल डिफाइंड, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज अ न्यूक्लियोइड विच इज़ प्रेजेंट. ओके, सो आई विल राइट इट. आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ नोट ऑफ इट वॉट एवर आई एम राइटिंग. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन है, और यू विल राइट न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डेवलप्ड. Why it is poorly developed? Due to absence of nuclear membrane and nucleoid. Okay, then here in eukaryotic cell you will write that nuclear region is well developed. क्या होता है eukaryotic cell में? eukaryotic cell का nuclear region is well developed or you can say well defined and is surrounded by nuclear
membrane. Okay, then the third point you can write with respect to prokaryotic cell is there is only a single chromosome which is present in the prokaryotic cell. So you'll write there is a single chromosome. And for this eukaryotic cell, we are going to write that there are more than one chromosome. कितने? There are more than one chromosome. Okay. Then fourth point we can write is the membrane bound cell organelle is absent in prokaryotic cell. Prokaryotic cell में क्या होता है? membrane bound cell organelle जैसे कि mitochondria and all, these are all absent in prokaryotic cell. So membrane bound cell organelle is absent in prokaryotic cell, and in eukaryotic cell you will write that the membrane bound cell organelles are present. क्या लिखोगे आप? membrane bound cell organelle is present in the eukaryotic cell. ओके, सो एक डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. प्लांट सेल में क्या देखा हमने? प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इट हैज़ अ लार्जर वैक्यूल यू कैन राइट. ओके, देन प्लांट सेल के पास न्यूक्लियस जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द प्लांट सेल. एंड एनिमल सेल्स पे हमने क्या डिस्कस किया कि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, एनिमल्स का वैक्यूल जो है वो स्मॉल होता है, एज वेल एज एनिमल्स का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल. एंड वन मोर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट जो हमने देखा कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, बट इट डजेंट हैव अ सेंट्रियोल. क्या नहीं है प्लांट सेल के पास? सेंट्रियोल नहीं है, बट एनिमल सेल्स हैव दैट सेंट्रियोल. ओके, so I hope now you know that what are plant cell and animal cells. and prokaryotic and eukaryotic cell पे हमने क्या डिस्कस किया? prokaryotic cell जो है वो हमेशा small in size होता है, it is approx 1 to 10 micrometer in size. ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल जो है दैट इज़ जनरली लार्ज इन साइज, जिसका साइज़ हो सकता है 5 से 100 माइक्रोमीटर. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन है दैट इज़ पुअरली डेवलप्ड. नाउ व्हाई दिस न्यूक्लियर रीजन इज़ पुअरली डेवलप्ड? बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ बीन प्रेजेंट देयर. बट इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ उल्टा. व्हाई? बिकॉज यूकैरियोटिक सेल के पास यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है दैट इज़ वेल डेवलप्ड. व्हाई? because there is a nuclear membrane which is surrounding this nuclear region. Okay, then how many number of chromosomes are present in prokaryotic cell? prokaryotic cell के पास सिर्फ एक single chromosome होगा, but eukaryotic cell is going to have more than one chromosome which will be present there. Okay, and prokaryotic cell के पास cell organelles नहीं होंगे. there will be no membrane bound cell organelles which will be present in the prokaryotic cell, but in eukaryotic cell the membrane bound cell organelles are present. Okay, so this is something differentiating point that you should know before studying about the cell कि कौन से different types के cell होते हैं. because basically in this lesson we are going to discuss on, you can say, the components of the cell, right? We are going to discuss on what are the living organisms made up of. Then we'll be discussing on, see, what is the cell made up of, the structural organization of the cell. So we have plasma membrane, which is also called as cell membrane, to discuss. Then we will be there are more activities which have been given, and we will be if possible we will be if it is possible I'll tell you if you can do that at your home or not, and we'll try to do that as well. Okay, then after that plasma membrane we are going to discuss about the cell wall component of the cell.
After cell wall we have nucleus to discuss in detail. Nucleus के बाद we have cytoplasm to discuss in detail. Okay, then we have cell organelles to discuss in detail. फिर हमारे पास cell organelle में we have endoplasmic reticulum which is called as ER to discuss in detail. Okay, then we have Golgi apparatus, we have lysosomes, we have mitochondria, plastids, vacuoles. Then now when it comes to cell, now after you study all these things about the cell division process is very important. So we are going to discuss here in this lesson two different types of cell division that occurs, that is mitosis and meiosis. Okay, so we'll be discussing that as well. उसके बाद में there are certain questions that we are going to discuss on. After that, like questions discuss करके, that will be the like that, those are the exercise questions. I hope that has been given, so we'll be discussing on that as well at the end. So cell division, which will it will be the last part. So in every part I will try to complete at least 4 different components of the cell. Okay, now I hope that whatever basic things I have told you, you are clear with it कि प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है. बिकॉज व्हेन यू मूव अहेड, okay, when we are moving ahead, you will get the terms directly as prokaryotic cell. That time you shall not wind up thinking that what a prokaryotic cell is. वहाँ पे प्लांट सेल बोल देंगे अचानक से. यहाँ पे आपको पता है प्लांट सेल क्या है. अदरवाइज व्हाट हैपन्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न in the starting itself I have explained you plant cell क्या होता है, animal cell क्या होता है, what is the difference that they have, what is a prokaryotic cell and what is a eukaryotic cell. Okay, and remember one more thing कि prokaryotes के अंदर there are mostly unicellular organisms which comes, जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं. बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर we have unicellular as well as multicellular you can say organisms or animals which have been included here. Okay, so you have to keep a note of it. Now let's start with this lesson, fundamental unit of life. Okay, and as I told you, don't forget that statement that cell is the structural and functional unit of life, and when it comes to discussing about the fundamental unit, it is obviously the cell that we are going to discuss on. Okay, so before starting about the cell, you should know certain theories which have been given with respect to cell. ठीक है, there are certain theories जिसको हम बोलते हैं cell theories, which were given by different scientists and by different researchers. Okay, and coming up with a theory is not a small task, it's a very big task, because there will be different scientists, there will be different researchers who are going to work upon your theory. They will be putting up limitations on the theory that no, this theory can't be accepted. Like आप जैसे politicians को देखते हो ना, opposing parties they always keep on you can say वो एक दूसरे के बारे में ढूंढती रहती है कुछ. वैसे ही when we are like coming up with certain theories, it is not a small task. किसी की theory आना is a very big thing, a very big achievement, because there are ample number of you can say scientists and researchers out who are working on your theory, and they are finding out what are the complications that can arise. And once all the scientists and researchers are agreeing to the theory that you have given, that is accepted universally and worldwide. Okay, so जब भी आप सेल के बारे में स्टडी करोगे, रॉबर्ट हुक ही विल बी द वन जिसके बारे में आप स्टडी करना ही करना है. ओके, सेल थ्योरी पे किसके बारे में बात होगी, रॉबर्ट हुक, बिकॉज ही हैज़ डन सर्टन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. सो हम रॉबर्ट हुक सर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हाउ ही हैड कम अप विद द सेल थ्योरी इज, सी, रॉबर्ट हुक सॉ दैट कॉक resembled the structure of a honeycomb which is consisting of many little compartment. जो हमारा कॉक होता है वो एक honeycomb जैसा structure like it is resembling the cock that we are having, it resembles the honeycomb structure. Okay, and if you can see, this honeycomb structure has many compartments, many little compartments within it, right. So this cock
is a substance which comes from the bark of a tree. From where do we get this cork? From the bark of a tree. कहाँ से मिलता है हमें cork? Bark of a tree से. So this was in a year 1665. Now we are into 2022. Okay. And ये कौन से year में हुआ था? Robert Hooke sir has he came up with the cell theory in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Now when you go back to 1665, there was no microscope, there was nothing which was available. Now the technology has developed a lot. But during that time, there was not even a simple microscope that existed. So Robert Hooke sir, he has developed his self-designed microscope, and using that he was able to find some small boxes, and Robert Hooke he called them as boxes cells. क्या बोला उन्होंने? Robert Hooke sir ने क्या बोला था cells को which he has observed? He called them as boxes cells because it looks like box, right? वो बॉक्स जैसा दिख रहा था उनको, तो उन्होंने उनको boxes cell बोल दिया. But he didn't knew that those are the cells which are present in that cork. Okay, cork क्या है, कहाँ से मिलता है हमें? We get that from the bark of a tree. And this cork, it resembles whose structure? Honeycomb का structure. Because अगर इन्होंने इसको अगर रॉबर्ट सर को the cells appear to be boxes like, so boxes का उन्होंने imagination किया with the honeycomb का structure, जहाँ पे उन्होंने small compartments देखे थे. So he was like, it looks like this honeycomb का structure. Okay, so let us just discuss on what are cells now. So cell was first discovered by Robert Hooke sir in the year 1665. ठीक है, सेल किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक सर ने किया है in the year 1665. and cell is a Latin word for a little room. सेल का मतलब क्या है? Little room. What is the meaning of the cell? Little room. and this is a Latin word which has come up. किसने डिस्कवर किया है सेल को? रॉबर्ट हुक सर ने किया है. So this is how what I am writing, you have to make a own notes and you have to write certain things so that अगर आपने अपने सेल पे फोकस किया, रॉबर्ट हुक, लैटिन वर्ड, लिटिल रूम, all these things you can correlate and you can study. Okay, so cell represents the basic structural and functional unit of life. सेल क्या represent करता है? Structural and functional unit of life. Now as I told you कि जब भी आप सेल्स के ऊपर स्टडी करोगे, रॉबर्ट हुक सर ही विल बी द वन जो हर बार आप उनको लाइक he'll come across you whenever you study about the cell. Same thing, this statement is a universally accepted statement where it is being said that cell is the basic structural and functional unit of the life, because हमारी पूरी body तो cell से बनी हुई है, right? So that is the reason we call this cell as the basic structural and functional unit of life. Now we have certain organelles which are present inside this cell. Okay, so organelles are what? Small structure inside a cell with specific function. There are small structures which are present inside a cell. Okay, and that small structures who are present, उनका कुछ specific function है that they are performing. It is not like कि cell के अंदर कुछ organelles है, they are doing nothing and they are present inside the cell. It is not like that. Every organelles are small structure. Okay, so every organelle that is present inside the cell has a certain specific function to perform. They are present there with respect to performing certain function which can be performed only by them. ओके, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. ऑर्गेनिजम्स कितने सेल से कंपोज्ड होते हैं? ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड और ऑन द अर्थ, दे आर कंपोज्ड ऑफ वन. इफ दे आर हैविंग वन सेल, we call them as unicellular organism. If they are having more than one cell, we call them as unicellular organism. So this term should be clear to you. I'll write it on the screen. Unicellular organism. What does it mean?
organism is made up of only one cell. Okay, so this is the definition of unicellular organism. Then the second type of organism we have is multicellular organism. क्या है? Multicellular organism. So your multicellular organism जो है, the organism is made up of many cells. So we human beings are multicellular organisms, and unicellular organisms का example can be algae and all. Okay, so organism या तो एक single cell से composed हो सकता है, either it can be made up of many cells. So all the tissues and the organs, as I told you कि cell जो है वो structural and functional unit है हमारी life का, तो cell से ही तो tissue बनते हैं, right? I'll explain you what is the definition of tissue. What you can write is, what is tissue? I'll write it here. A group of cell is called a tissue. What are organs? A group of tissue together forms the organ. Getting my point? तो all the tissues and organs, they are composed of cells itself ना, because cell नहीं होगा तो tissue नहीं आएगा, tissue नहीं आएगा तो organ नहीं आएगा. So they are all interdependent on cell itself. So there is no life without cell. This is the most important thing that we have to know, that there is no life which exists without the cell. अगर cell नहीं है तो life भी नहीं है, because cell से ही तो life आ रही है, right? So cell जो है, that is very much important factor which should be there itself, then only the life is possible. If there is no cell, there is no life. And cell is derived from a Latin word which means little room. And who has discovered the cell? It was Robert Hooke, sir, who have discovered the cell in the year 1665. Okay, so I hope you are clear with this much of information which has been given to you on the screen. After that, see, now the question that comes to our mind when it comes to cell or when it comes to living organism, कि हम सारे living organism what are we made up of, right? What are we made up of? कभी आपने सोचा है कि आपकी बॉडी कैसे बनी है? कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा ना कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी कैसी बनी हुई है, हाउ आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ. सो फॉर दैट वी हैव एन एक्टिविटी to go with. Okay, now what are we going to do is we are going to take a small piece of onion bulb. क्या लेंगे हम? Onion लेंगे. And now with the help of a pair of forceps we can peel off the skin. So आपने घर में कांदा देखा है ना, कांदा मीन्स अनियन, राइट? सो आप फोर्सेप की हेल्प से क्या करोगे, अनियन का जो बाहर का पील है उसको निकालोगे, उसकी स्किन को निकालोगे. एंड द स्किन ऑफ दैट अनियन इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी कॉल इट एज एन एपिडर्मिस. क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस. तो आप फोर्सेप के थ्रू क्या करोगे, उसके पील्स को निकालोगे, एपिडर्मिस को निकालोगे. ओके, फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द ऑनियन, दैट इज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द ऑनियन से आप उसके पील्स निकालोगे. Now this layer you can put that immediately into a watch glass containing water. आपको क्या करना है अभी? I'm drawing that onion. Now my drawing is not that good, but still I'll draw it. Okay, so this is how the onion can be. Just bear my drawing, okay? And this is how it is from inside, right? Bear my drawing, okay? So watch glass, if I am telling, watch glass is something like this. Okay, it is just a small glass like plate like you'll see, and ये glass से बना होगा, कांच का होगा ये, ठीक है? So watch glass में आपको क्या करना है, watch glass में आपको थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर वो अनियन को डाल देना है. ओके, क्या करोगे आप, जो आपने पील निकाला है, दैट इज जो आपने एपिडर्मिस लिया है, वो एपिडर्मिस को आप इसके अंदर जो वाटर है
उसके अंदर डाल दोगे, वॉच ग्लास के अंदर, वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब ये वॉच ग्लास से अच्छे से आप पानी के अंदर डालने के बाद यू हैव टू टेक अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड ऐसा दिखता है, ये कैसा होता है, कांच का होता है। ओके, तो मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। अभी हमें एकदम फ्लैट पील लेना है, इट शुड बी फ्लैट लाइक दिस। तो हमने एक फ्लैट पील ले लिया, ठीक है, अनियन पील है वो। ये क्या है, दिस इज़ एन अनियन पील दैट यू हैव टेकन, दैट इज़ द एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, अपने वॉच ग्लास से क्या किया, उसको स्लाइड पे ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लास स्लाइड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वॉच ग्लास। तो आपने वॉच ग्लास से क्या किया, ग्लास स्लाइड पे लिया एपिडर्मिस ऑफ द ऑनियन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप क्या करोगे, अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। अब एज आई टोल्ड यू दैट वी नीड अ फ्लैट पील ना, फ्लैट होना चाहिए वो पील, बिकॉज वी हैव टू ऑब्जर्व दैट अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू टेक अ फ्लैट पील। सो फॉर दैट वी माइट रिक्वायर अ कैमल हेयर पेंट ब्रश एज वेल। ओके, वो पील को ट्रांसफर करने के लिए। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन। क्या डालेंगे हम, सेफ्रानिन सोल्यूशन। क्यों हम सेफ्रानिन सोल्यूशन क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये जो पील है हमने जो लिया है उसको कलर मिले एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दैट इज़ द रीज़न दैट हम सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन सोल्यूशन डालेंगे इसके ऊपर, एंड देन सेफ्रानिन डालने के बाद वी आर गोइंग टू कवर दैट विद अ कवर स्लिप। तो ऐसा एक स्मॉल छोटा सा स्क्वायर शेप्ड कांच का ग्लास आता है जिसको हम बोलते हैं कवर स्लिप। क्या बोलेंगे इसको, कवर स्लिप। एंड ये कवर स्लिप आप कहाँ पे रखोगे, अपने एपिडर्मिस के ऊपर, दैट इज पील के ऊपर रखोगे जिस पे आपने सेफ्रानिन डाला है। नाउ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप। अभी आपने जो स्क्वायर शेप रखा है ना, उसको रखते टाइम ये ध्यान देना है कि उसके अंदर एयर बबल्स ना आए, बिकॉज आपने सेफ्रानिन डाला है, सोल्यूशन डाला है, तो देर आर चांसेस दैट एयर बबल्स कैन कम अप। सो यू हैव टू टेक केयर and you have to avoid that air bubble when you are putting that cover slip, and you have to do that with the help of mounting needle। तो आप क्या करोगे, पहले एक नीडल को अंदर रखोगे ऐसे पॉइंट करके, एंड देन आप कवर स्लिप डालोगे एंड देन धीरे से वो नीडल को निकालोगे। ओके, सो यू हैव टू आस्क योर टीचर टू हेल्प यू व्हेन यू आर प्रैक्टिकली डूइंग दिस इनसाइड द लैब। ओके, सो नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील। ये क्या बनाया है हमने, वेट आई विल राइट इट हियर, दिस इज अ temporary amount of onion peel। क्या है ये, temporary amount of onion peel है। now we can observe this slide under low powered followed by high powered of a compound microscope। now let us first study what exactly a compound microscope is। now if you can see the diagram, this diagram is of compound microscope itself। तो अपनी ये जो स्लाइड बनाई है ना, आप कहाँ पे रखोगे, ये वाले पोर्शन पे आप अपने स्लाइड को रखोगे, एंड आप ये आई पीस से, नाउ दिस क्लिप कैन यू सी, वो वहाँ पे रिसोल्यूशन पावर होता है। क्या होता है, रिसोल्यूशन पावर। सो रिसोल्यूशन पावर एक होता है 10x, एक होता है 45x भी होता है, देन वी हैव 100x एज वेल। ओके, और एक 90x भी होता है। आई गेस दैट एग्जिस्ट इन सर्टन काइंड ऑफ, सारे माइक्रोस्कोप में नहीं होगा बट वो होता है 10x एंड 100x तो होता ही है। ओके, 1000x भी होता है। सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट, हम लो से स्टार्ट करेंगे 10x से, फिर धीरे धीरे हम फोकस करेंगे उसको, एंड वी आर गोइंग टू 10x एंड 1000x। तो हम उसको और क्लियरली देख सकते हैं व्हेन वी फोकस इट टू हायर, यू कैन से हाई पावर। ओके, ये क्या है हमारा, दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे हम अपना माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रखते हैं, जहाँ पे हम अपना ग्लास स्लाइड रखते हैं। ओके, एंड दिस इज़ द पावर बटन, इसको हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब। यहाँ से आप कोर्स का एडजस्टमेंट करोगे, बड़े वाले से क्या करोगे, कोर्स एडजस्टमेंट, एंड अगर आपको फाइन एडजस्टमेंट करना है तो आपको ये छोटा वाला यूज़ करना है। ओके, दिस इज़ द आर्म जहाँ से आप माइक्रोस्कोप को होल्ड करोगे, एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, आपका जो ग्लास स्लाइड है वो लेंस को आप अच्छे से फाइन एडजस्टमेंट कर सको, एंड वी कैन सी दैट थ्रू द आई पीस। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव एन ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज़ प्रेजेंट देयर। हियर इज़ गोइंग टू बी अ मिरर, यहाँ पे एक मिरर होगा जो वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा आपके ग्लास स्लाइड पे। यू विल बी हैविंग अ कंडेंसर जस्ट अबाउट द मिरर,
and this is the base of the microscope. So you have a base, you have an arm, and you have an eyepiece. ये है body tube. So I hope you are clear with the structure of the compound microscope. Now to get it clear, I would like to tell you to draw this thing in your notebook. Like जो compound microscope है, ठीक है, हम क्या करेंगे, we are going to draw this compound microscope, because I want you all to know how this compound microscope look likes and everything. Okay, so we can go with it. So I want you to draw and label the diagram or the structure of this compound microscope, because you should know this. Now I'm going to explain you the activity in short. आपको क्या करना है, आपके पास एक अनियन होना चाहिए, कांदा होना चाहिए. अब आप फोर्सेप के हेल्प से या अपने हाथ से क्या कर सकते हो, because we don't have a compound microscope at our house, we cannot do this experiment at our house, right? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अनियन पील को निकालोगे, उसका एपिडर्मिस लोगे. एपिडर्मिस मतलब उसका जो पील है, जो स्किन है अनियन का, आप वो लोगे, एपिडर्मिस लोगे. उसको आप वाटर ग्लास में डाल के थोड़ा सा वॉश करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू टेक अ फ्लैट पीस. ठीक है, आप क्या लोगे, एक फ्लैट परफेक्टली फ्लैट पील लोगे अपने ग्लास स्लाइड के ऊपर. अब वो ग्लास स्लाइड के ऊपर आप उसको उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ सेफ्रानन सोल्यूशन डालोगे. सेफ्रानन सोल्यूशन डालने के बाद विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल आप क्या करोगे, उसके ऊपर कवर स्लिप डालोगे. नाउ व्हाई दिस माउंटिंग नीडल इज बिन नीडेड, सो दैट यू कैन अवॉइड द एयर बबल विच कम्स व्हेन यू आर प्लेसिंग अ कवर स्लिप, बिकॉज वहाँ पे आपने सेफ्रानन सोल्यूशन डाला है, पानी है, सो देर आर चांसेस कि बबल का फॉर्मेशन हो जाए, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न विद द हेल्प ऑफ दिस माउंटिंग नीडल आप वो कवर स्लिप डालोगे, and then you can ask the help of your teacher also in mounting in putting this cover slip. Okay, after that you have that temporary mount of onion peel with you. आपका ग्लास स्लाइड रेडी है. अब आप उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ऊपर रखोगे, स्टेज के ऊपर, वेयर यू हैव द ऑब्जेक्टिव लेंस. आप उसके नीचे अपने पील को रखोगे, वेयर यू हैव एडेड द सेफ्रानन. ठीक है, तो वो किसके नीचे होना चाहिए, जस्ट below to this objective lens, and then you have to adjust that using the coarse adjustment and the fine adjustment, and then you have to visualize the cells which are present in that onion peel using the eyepiece of the compound microscope. Okay, so I hope that this activity is clear to you all ki what exactly is to be done. Okay, so now let us move ahead. Now see, this is what you are going to observe under the compound microscope. अब वो जो अनियन पील का आपको एपिडर्मिस लिया था, आपने उस पर सेफ्रानन डाला था, राइट. सो what do we observe as we look through the lens? This is a question that comes to your mind. यार अगर हम कांदे के छिलके को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर डाल रहे हैं by adding a saffron solution, this is what you are going to observe under the microscope. Okay, and can we draw the structure that we are able to see through the microscope on an observation sheet? Yes, obviously, whatever you are seeing under the microscope, आपको ऐसे observation लिखना होता है, and you have to draw that कि what you have seen. So you are going to make it like this. ऐसे करके जो भी आपने देखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, what kind of structure you have seen, you have to draw that there. Okay. Now my drawing is very much bad, so उसके बाद इसके अंदर आपको डॉट्स दिखाना है, and these dots are the nucleus that are present. So you are able to visualize the nucleus which are present as well as the cells which are present. So now have you ever this question have ever came into your mind कि onion peel के अंदर भी cells है? नहीं, right? So this is a magic for you all, that onion peel also have the cells, and inside the cell we can see the nucleus as well, right? So this is the observation that you're going to see when you watch that glass slide under the compound microscope. Now can we try preparing a temporary mount of peels of onion of different sizes? What do we observe, and do we see similar structure or different structure?
अब अगर आप अलग अलग अनियन पील्स का टेम्पररी माउंट रेडी भी करते हो एंड यू आर विजुअलाइजिंग दैट, okay, you are going to observe the similar structure because all the peels of the onions, they are going to have the similar structure, right? So we are going to see that we are going to have that similar structure there. Okay, so now what are the structures that we are going to look when we make this temporary mount of peels of onions of different sizes? Because now it might be possible कि आपने अभी बहुत छोटा सा peel लिया था, now you want to visualize it with a big peel, so you can do that, but it depends upon the like जो ग्लास स्लाइड होता है हमारा वो एक स्पेसिफिक लेंथ का होता है, तो यू हैव टू सी टू इट दैट यू आर यूजिंग दैट मच साइज ओनली. ओके, सो व्हाट स्ट्रक्चर्स विल you be able to visualize under that compound microscope? So these structures, they are going to look similar to each other. You can take any temporary amount of peel of onion and you can visualize. You will see that the structures which you are going to see that under the microscope, they are going to look similar to each other. कैसे होंगे वो? They are going to be similar to each other, okay, and together they form a big structure like an onion bulb. तो अगर आप एक साथ सारे structures को देखोगे तो you will feel like that it is a big structure, and this big structure of the onion, it looks like an onion bulb. Okay, so we find from this activity that onion bulbs of different sizes, they have similar small structure which is visible under a microscope. ठीक है, अनियन बल्ब अगर हम अलग अलग साइज़ के अनियन बल्ब्स ले रहे हैं तो उनके अंदर सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे, एज वी कैन सी दिस अंडर द माइक्रोस्कोप विच इज़ बीन शोन इन द फिगर 5.2 वेयर यू कैन सी द सेल्स ऑफ एन अनियन पील. ओके, तो अनियन बल्ब में भी यही सेल्स दिखेंगे विद द न्यूक्लियस. ओके, सो द सेल्स ऑफ द अनियन पील, इट विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे कम फ्रॉम. ओके, आप कितने भी बड़े साइज़ का अनियन ले लो, कितने भी छोटे साइज़ का अनियन ले लो, दे आर गोइंग टू हैव द सेम सेल, एंड दैट इज़ द रीज़न यू विल सी दैट दे ऑल लुक द सेम. ओके, सो दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन बल्ब. तो आप ये जो छोटे छोटे सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, व्हाट आर दिस सेल स्ट्रक्चर्स? दिस आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन बल्ब विच इज़ बिल्डिंग द अनियन. Okay, I want you all to draw this cells of an onion peel, labeling nucleus and cells in your notebook, so that you have an idea of exactly how the onion cells look like. Okay, so now see, these structures which you see under the microscope of the onion peel, we call that structure as cells. क्या बोलते हैं हम उनको? We call them as cells, and we know that Robert Hooke sir, he was the first one जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया है, right? So not only onions but all organisms that we observe around us, they are made up of cell. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स दे आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, वो किससे बने होते हैं? दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अनियन भी सेल से बना है, राइट? बट योर वन कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स इज़ क्लियर कि जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो अपने आसपास, वो सब किससे बने हैं? दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. हाउएवर देर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लीव ऑन देयर ओन. तो अभी ये भी आपको जानने की ज़रूरत है दैट देर आर सिंगल सेल्स एज वेल जो खुद से दे आर लिविंग ऑन देयर ओन, दे डोंट नीड एनी हेल्प, दे आर ऑल independent. Okay, so there are certain single cells who are living on their own. Okay, now see, this is the second activity which
I'll just tell you this, and in brief we will discuss this in the next class. Okay, so this activity 5.2 is regarding preparing a temporary amount of the leaf peel. अभी हमने onion peel का temporary amount prepare किया था. Now we have to prepare a temporary amount of the leaf peel, the tip of the root of onion. अभी हमने onion peel लिया था, अभी हम onion का root लेंगे, and even the peels of onion of different sizes. Okay, now after performing this above activity, let us see what the answers to the following question will be. So if you are taking the roots and the peels of the onion, I told you all the cells, they are going to look similar with respect to shape as well as the size, right? So do all cells look alike in structure? Yes. Could we find differences among the cells from different parts of the plant body? Now this is a question that I want you all to find it out. Now you can just consider this taking your body parts as well, कि हमारे पूरे body parts में एक ही type के cells present है, और we have different types of cells which are present in our plant body. Because I should leave you with a question so that you can juggle with your mind, right? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई एम लिविंग विथ यू कि हमारा जो पूरा बॉडी है, वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, राइट? हैंड्स, लेग्स, स्टमक, आईज, नोज, हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में क्या एक ही जैसा सेल है? वी आर हैविंग द सेम सेल ऑल थ्रू आउट आवर बॉडी. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच यू नीड टू फाइंड इट आउट एंड आंसर फॉर. ओके, एंड व्हाट सिमिलैरिटीज कुड यू फाइंड? यू हैव टू इवन go with this. Okay. So this we are going to discuss this in the next class. Okay, then after that we will be discussing on, like the first question was what all living organisms are made up of. So we all know that they are made up of cell, right? But the second question which will come into our mind is what is a cell made up of, because that is also important ना. ठीक है, हम living organism cell से बने हैं, पर cells भी तो किसी चीज़ से बना है, right? So the question is what is the structural organization of a cell? So we will be discussing on to this as well, ki what is the structural organization of the cell and with what the cell is made up of. So here we will be discussing different components of the cell with which the cell is made up of. So we have plasma membrane, which is also called as cell membrane, to discuss on. Then we have cell wall, which is the another component of the cell that we have. After cell wall we have nucleus to discuss in detail. Nucleus पे discuss करके we are going to discuss on cytoplasm, which is also one of the component of the cell that we are having. Then we will be discussing on different cell organelles which are present, like we have endoplasmic reticulum, we have Golgi apparatus. These are all different cell organelles which are present. Okay, then after Golgi apparatus we have lysosomes to discuss, we have mitochondria to discuss, we have plastids to discuss, we have vacuoles to discuss, and then we are going to discuss on cell division in detail, where cell division is of two type. कितने टाइप के होते हैं सेल डिवीजन? दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस एंड एक होता है मियोसिस. सो व्हेन यू गो अहेड, लाइक आप जब 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, तब आप ये सेल डिवीजन पे इन डिटेल स्टडी करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली माइटोसिस इज, एंड माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, एंड हाउ द सेल्स आर डिवाइडिंग एंड हाउ दे आर ग्रोइंग इन नंबर. सो अगर आप डायग्राम ही देख रहे हो, सो माइटोसिस में we get only 2 daughter cells, but in meiosis we get 4 daughter cells. So there are some differentiating point which I will be writing, and I want you all to know about mitosis and meiosis, that I will be writing and giving you a note as well on that. Okay, after that we will see what exactly we have learned in this lesson. Fundamental unit of life, a brief summary of the lesson. After that we are going to discuss on 10, I guess there are 10 questions which we will be discussing on, where we are going to make a comparison between the plant cell and animal cell, which we have already done. Then a comparison between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Then we will be discussing on what will happen if the plasma membrane ruptures or if it breaks down. After that we will be discussing on
what will happen to the life of cell if there was no Golgi apparatus? The Golgi apparatus is one of the cell organelles that we are having, right? तो अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो what is going to, like, what will happen to the life of the cell? After that we will be discussing on which organelle is known as the powerhouse of the cell and why do we call that organelle as the powerhouse of the cell. ठीक है? Then we have the question as, where do the lipids and the proteins constituting the cell membrane get synthesized? Then how does an amoeba obtain its food? Because amoeba is a unicellular organism. So question comes here कि amoeba अपना खाना कैसे obtain करता है? Then what is osmosis? Osmosis we are going to discuss on when we are discussing about the cell membrane, which is also called as a plasma membrane. Okay. And one activity lastly, and the last question that we are going to discuss on, कि which type of cell division is required for growth and repair of body and which type is involved in the formation of gamete. So this is how, after discussing on this 10 questions, after discussing the summary of the lesson, we are going to end up with this lesson, fundamental unit of life. So I hope whatever activity and whatever things we have discussed about cell today in this part, you are clear with it. The rest of the part for this lesson, fundamental unit of life, we will discuss in the next part. Thank you everyone.